In how many ways can 7 identical erasers be distributed among 4 kids in such a way that each kid gets at least 1 eraser, but nobody gets more than 3? So the first part is you have to ensure that every kid gets at least 1 eraser. Okay. So हम पहले हर एक को एक eraser दे देते हैं, right? So 7 में से exactly 4 erasers चले गए, बचे कितने? Exactly 3 erasers, right? Now these 3 you can divide them into 4 groups, right? This can be done in 3 plus 4 minus 1, C4 minus 1, that is 6 C3. It's nothing but 20. Okay, अब बहुत लोग घाई में यहाँ पे आंसर C मार्क कर लेते हैं, which is completely incorrect. Okay, why? Because we have one more condition to be fulfilled, that none of them gets more than 3. So more than 3 वाला केस हमें सबसे निकालना पड़ेगा. Okay, अब guys more than 3 वाले केस कब होंगे? जब आपने ऑलरेडी हर एक को एक एक इरेजर दिया हुआ है, राइट? अब आप हर एक को सपोज 3 दे दिया. फॉर एग्जांपल एक केस ये होगा कि when you are dividing these, okay, these 3 objects between these 4 groups, ओके एक केस ये हो गया, आपने 3 0 0 0 दे दिया होगा, ये एक केस होगा. दूसरा केस क्या होगा? आपने 0 3 यहाँ दे दिया होगा, बाकी सबको 0 दिया होगा, राइट? एक और केस क्या होगा कि आपने सपोज 0 0 3 यहाँ दिया होगा, बाकी सबको 0 दिया होगा. एंड एक और केस ये होगा कि आपने इन दोनों तीनों को 0 दिया होगा, लास्ट वाले को 3 इरेजर्स दे दिए होंगे, राइट? सो दीज 4 केसेस आर मेकिंग इट 4 4 4 विद एनीबॉडी व्हिच यू गिव 3, राइट? अगर आपने इनमें से किसी को भी 3 दे दिया, ओके, ऑलरेडी गिवन देम 1 इरेजर, सो नाउ दैट मेक्स इट टोटल 4, राइट? इस क्वेश्चन में नोबडी शुड गेट मोर देन 3 इरेजर बोला है, राइट? तो किसी को 4 नहीं देना चाहिए. So you remove all these 4 cases where you're giving 3 3 3 3 to exactly one child, right? So that means, okay, you have to just remove 20 में से 4. The final answer is 16. That's the A option.